Loving viewers to this channel. In this channel, I'm discussing about elements of cost and also classification of cost. My dear students, there are three elements when we are talking about cost in our cost accounting subject. Then there are three elements while talking about cost. So one is material, another is labor, another is expenses. पिलाने cost element होची तीनटा गोटे material, गोटे labor, गोटे expenses. Material is one of the important part of cost. So material means any physical commodities attached to the product directly or indirectly. So material two types, one is direct material, another is indirect material. Direct material means the materials which can be easily identified with a specific unit of output. जोटा को सीधा सड़क आइडेंटिफाई करियबो, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल. फॉर एग्जांपल गोटे लोक किबा गोटे लोक ड्रेस पिनिछि पाइ गोटे शर्ट पिनिछि ताको जे पचरा होछि ताले ते जो कॉटन डायरेक्ट मटेरियल जो आमे पचारिबा ता जो कपड़ाटा सेटा डायरेक्ट मटेरियल. सो indirect material तर bottom buckram other raw materials जहाँ लगी थी it is not easily identified. So this is indirect material. So direct material refers to that part of material which can be easily identified with a specific unit of output. This is your direct material. Simply direct material जदि हमें example नबा in case of sugar industry, sugar cane is the direct material. In case of furniture making industry, wood is the direct material. In case of textile industry, cotton is the direct material. In case of building construction, your bricks, sand, cement, rod, these are direct material. So which can be easily identified with a specific unit of output, it is called direct material. For example, हमारे chicken बनौचे कि mutton बनौचे, तेबे हमें raw chicken जोड़ा कहूँ हमें कंचा मांस सेटा होची direct material. So direct material refers to those material, but that part of material which can be easily identified with a specific unit of output. Indirect material refers to that part of material which cannot be easily identified with a specific unit of output. Production process रे लागिबो, बे production process रे निश्चित भाव रे लागिबो, but it cannot be easily identified with a specific unit of output. For example, आमे furniture तैयारी करूचे. लोक सीधा सड़क पचार एटा कौ काठ एटा टिक बा सागवान बा पियासा डायरेक्ट आइडेंटिफाइड बट सेतर इंडायरेक्ट मटेरियल तमरा केमिकल्स लगुछन जो कलर फलर कपे केमिकल्स लगुछथि सब नेल अदर मटेरियल्स लागुछि नले फिनिश प्रोडक्ट हेई परिबेनी बट इट कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड विथ ए स्पेसिफिक यूनिट ऑफ आउटपुट. सो दैट इज व्हाई इंडायरेक्ट मटेरियल refers to that part of material which cannot be easily identified with a specific unit of output. Simply direct labor, it refers to those laborers who are directly involved in the process of production. आमे टेलर मैन पाकु जिबा जो लोकटे स्टिच करछि से डायरेक्ट लेबर. जदि हमें बिल्डिंग काम करछि जो मैसन लागि छथि से माने डायरेक्ट लेबर. गोटे कुक कोन करछि रोसई करछि से होछि डायरेक्ट लेबर. गोटे होटल रे कुक डायरेक्ट लेबर. बट गोटे होटल रे जे कुक करछि डायरेक्ट लेबर. आउ केतेडी सर्व करिया को छथि आउ के हेल्प करिया के छथि हां पोछा मरिया होटल रे छथि clean करिया को होटल छथि. They are laborers, they are not directly involved in the process of production, so they are indirect laborers. They are indirect laborers. आमे सीधा सळा गोटे बिल्डिंग जो मैसन माने काम करछथि डायरेक्ट लेबर, बट केतेडे लेबर अछथि जो माने काम करछथि they are not indirect, they are indirectly involved in the process of production. They are indirect labor. आमे प्रोडक्शन करछि जे प्रोडक्शन वर्कर माने मशीन ऊपर काम करछथि जे प्रोडक्शन डायरेक्ट लेबर, बट फैक्ट्री वॉचमैन सुपरवाइजर और जो माने अछंती जो माने फैक्ट्री अदर स्टाफ्स फैक्ट्री क्लीनर्स मैकेनिक्स they are not direct labor, they are indirect labor. So the indirect laborers, they refer to those laborers who are indirectly involved in the process of production. They are indirect labor. So again direct expenses
means it is either involved, directly involved by it is involved in the process of purchase of raw material. For example, आमे झारखंड raw material 5 लाख टका किना हला, freight, wages, labor load alert, packing एगुडी सब बाबद कैरेज इनवार्ड ए बाबद आमे 50,000 खर्च कलु साल हमर मटेरियल दाम पड़ेला 5,50,000. सो दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सपोज लेबर माने कर लेबर माने तमरो बिहार लेबर आसीबे तांकर पेमेंट तांको 5 लाख करा गला से मानकर आसीबा जीबा जते प्रकार खर्च आमे 60,000 खर्च कलु तल दिस आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो हमर लेबर टा 5,60,000 पड़ गला. तो एबे प्रश्न आसुची इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस खर्च, salesman salary, salesman commission, advertisement, all these things are indirect expenses. So elements of cost re direct material, labor, expenses. Material को classification कले direct material, direct labor, direct expenses. Direct material, indirect material, direct labor, indirect labor, direct expenses, indirect expenses. तेबे जदि क्वेश्चन में पढ़िया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनटा को हमें ऐड कर दबा. दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट. सो प्राइम कॉस्ट एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. सेमती इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ओवरहेड. Direct material plus direct labor plus direct expenses is equal to prime cost. Indirect material plus indirect labor plus indirect expenses is equal to prime cost. These are the elements of cost. एबे आसिया हमें classification of cost. Classification of cost रे गोटेला on the basis of function. On the basis of function हमर entire the industrial unit टा करिया तर function अनुसार cost को classification कराइछ. हमर इंटर फैक्ट्री इंटर इंडस्ट्री को हम क्लासिफाई कले गोटेला मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, आउ गोटेला ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, आउ गोटे सेलिंग आउ डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, आउ गोटे रिसर्च पार्ट. मतलब केते गोटे फैक्ट्री अछंती से माने रिसर्च करंती कोन कोन नुवा प्रोडक्ट हबो, कस्टमर मान को डिमांड कोन हबो, केमते नुवा टेक्नोलॉजी लागिबो, नुवा रॉ मटेरियल, नुवा सोर्स ऑफ मटेरियल कोन से नुवा प्रोडक्ट, नुवा इनोवेटिव प्रोडक्ट केमते बाहर से माने रिसर्च करंती. बड़ बड़ फैक्ट्री बड़ बड़ इंडस्ट्री रे से मान को सेपरेट यूनिट थाए. But small factory they may not have. But in case of large scale industries, large scale organizations, there is a separate department, research department. They conduct research about new product, about new source of material, about new innovation. All these things are being done. Research works are done. So this is a research department. So, the manufacturing part जो खर्चला, this is called manufacturing cost. So it refers to those costs which are incurred in the manufacturing unit of an organization or of an industrial organization. Manufacturing cost, it is otherwise called production cost. So this is production cost. Manufacturing part रे जो खर्चटा करागला, this is called manufacturing cost. For example, जड़े पचारिबो coal, gas and water, supervisor salary, depreciation on a plant. So these are what? Manufacturing related items. So the manufacturing cost. तो एबे प्रश्न आसुची सेठी डायरेक्ट मटेरियल लागिबो, सेठी डायरेक्ट लेबर लागी, व्हाटएवर मे बी. सो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट रे मैन्युफैक्चरिंग पर्पस रे जो खर्च गुडी को लागिला इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. अगेन ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. सो ऑफिस इज अनदर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव बाबद रे जो खर्च गुडी को होची तो सेटा कोची ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड इन द ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन. ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑफिस राइटिंग, ऑफिस मटेरियल, व्हाटएवर मे बी. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटिंग टू office or administrative unit of an organization, because these costs must have to be incurred for the purpose of running an office or administrative unit of an industrial organization, because office or administrative part is a very integral part of an organization, whatever may be the organization. बस ताहले एटाला ऑफिस और administrative cost.
office staff salary, office rent, office lighting, depreciation, office furniture, office printing and stationery, office director salary, managing director salary, whatever may be. So this is what office or administrative cost. Again, selling cost, it refers to those costs which are incurred in connection with the sale of product. आम प्रोडक्शन टाक सेल टाक आम करिया आम सेल करिया सेल बढ़ाया जिते प्रकार खर्च करिया सेटा सेलिंग कॉस्ट सेटा सेलिंग कॉस्ट कहि पारे फॉर एग्जांपल आम एडवर्टाइजमेंट करिया सेल्समैन सैलरी डेलीवरी वैल एक्सपेंसेस showroom rate godown rate whatever may be the expenditures that is pertaining to your what selling of goods. So the expenditure, it refers to those expenses which are incurred in connection with the sale of goods, sale of finished goods, just like salesman salary, advertisement, delivery van expenses. All these things are what your selling cost. One is distribution cost. Distribution cost, sometimes goods are transported from the manufacturers go down to the wholesalers, stockists, distributors go down. तो मैन्युफैक्चरर गोडाउन को स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर मानकर गोडाउन को फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा जाए जदि ट्रांसपोर्ट करागला से बाबद रे हमर खर्च होची फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ भारत सब राज्य को ट्रांसपोर्ट करा होची तो सेति पई जो खर्च करा जाउची सो इन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स गोडाउन to the wholesalers go down, distributors go down, C&F agents go down, or whatever may be जो खर्च गुड़ी का हमें करा जाउची ताको हमें कहउची सीधा सड़क को कहउची हमें व्हाट ना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिलीवरी वैन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और whatever may be the go down so warehouse whatever may be the जो कहला so for the purpose of distribution of goods or transportation of goods from the manufacturers go down to the wholesalers go down. This is called distributions go down but distributions cost. Again research cost, research and development cost एठी लिखि परिबा research and development cost. Research and development cost in case of large scale organization, then we have a separate department, research and development department, जोठी साइंटिस्ट माने अछंती जो माने रिसर्च करंती नुवा इनोवेशन करंती नुवा प्रोडक्ट हबो नुवा इनोवेशन हबो नुवा रॉ मटेरियल. So research work is done continuously for the purpose of development of an organization. How new products can be launched, produced, new source of material, new technology कौन हबो सेति पई जो खर्च उडी के सेति करा जाउची जेते खर्च साइंटिस्ट मानकर दरमा दिया जीवो जेते साइंटिफिक इक्विपमेंट लागुची तार डेप्रिसिएशन जेते साइंटिफिक खर्च करा जाउची जेते लैबोरेटरी करा जाउची रिसर्च खर्च करा जाउची that expenses is called research and development expenses. So on the basis of a function we have been classified or we are classifying the four types. One is manufacturing cost, another is selling cost, another is office and administrative cost, another is distribution cost, and research and development cost. So on the basis of functions we can classify cost under these heads. So now on the basis of identifiability तो हम क्लासिफिकेशन करै on the basis of identifiability cost गोटे हला डायरेक्ट कॉस्ट आउटला इनडायरेक्ट कॉस्ट. So direct cost mo already koichi it refers to those costs which can be directly identified with a specific unit of product, direct material, direct labor, direct expenses. So it is directly identified with a specific unit of output. Furniture industry ku jiba sidha salaka wood is the direct material for furniture making industry, cotton in case of textile industry, sugar cane in case of sugar industry. So these are direct material. Same the direct labor are those who are involved in the directly involved in the process of production.